Hello, everyone. Namaskar, Adab. You're watching another edition of Let's Talk Policy, where, for Kautilya School of Public Policy, we bring you some deep dive conversations into issues that really matter. I'm Smita Sharma. I've been a journalist for more than 2 decades now and a visiting faculty at Kautilya. And I have a special guest here today, Dr. Ullah, who is a noted economist, also member of the Telangana Public Service Commission. He's a research director at CDPP, wears many hats from TISS to Manipal University and also a visiting faculty at Kautilya School of Public Policy. And we'll keep this conversation, like always, in both English and Hindi, because we do understand कि policy ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले शहरों तक ही पहुंचे. हम जब नीतियों की बात करते हैं तो हमें सारे शहरों को, पैन इंडिया को हमें इन्वॉल्व करना होता है. और आज जो हमारी थीम है, थोड़ा सा मैं उस थीम से डाइग्रेस भी करूंगी, because there is so much happening around the world. I think that we need Dr. Amirullah Khan to weigh in. We are in the middle of a hot war, which was not something that we had figured in when we decided on this conversation topic a couple of weeks ago. But, to stay true to the theme of the topic to begin with, of course, you know that Dario Amodei, the CEO of AI, the company Anthropic, which of course creates that very popular tool called Claude, and that has been doing some lot of magic. He argues that artificial intelligence is transitioning from a tool to an agent capable of doing most, maybe all of the work currently handled by human software engineers, as well as roles in marketing, law, administration. और आपको ये भी याद दिला दें कि आमोडाई ने मई 2025 में भी एक बयान दिया था, जिसके बाद काफी जो है हलचल मची थी, where he told Axios that AI could wipe out half of all entry-level white-collar jobs within 5 years. बहुत बवाल मचा. This year we saw India hosting that international AI summit, a lot of talk around AI, but we need to factor in that what's really happening with the Indian economy, even without the AI space. What's happening on AI? Are we really a skilled workforce at this point in time? And how is the war going to cast a long shadow as far as the workforce is concerned? Now, before I get in, Dr. Amirullah Khan, a quick reminder to all our participants. One, that the admission cycles are on for the MPP course at Kautilya School of Public Policy. You can check out a prospectus at the website. Ranjita, my colleague, will be sharing it here in the chat box too. Reach out to the admissions team if you have any queries. And B, if you have any questions after the first 15-20 minutes of my conversation with Dr. Amirullah Khan, please use the raised hand emoji. मैं एक दो लोगों से कहूंगी कि आप unmute करके भी सवाल पूछ सकते हैं. The rest of you can also type in your questions into the chat box. Dr. Khan, first of all, if I may start, thank you so much for agreeing to do this while you're in Scotland, I understand. From, how are you really looking at this entire conversation on around AI becoming a job multiplier, a force multiplier, or a job replacement tool, really, in the context of the Indian workforce? Okay. Thanks, Smita. Thanks for having me in this conversation. बहुत शुक्रिया आपका. And I will try and oscillate between अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी, so that we get a good conversation going. जब आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया तो मुझे एक बड़े पुराने ऑथर की याद आई. आर्थर सी क्लार्क 100 साल पहले लिखा करते थे, और जब आर्थर सी क्लार्क से पूछा गया कि ये टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है, तो ही रोट 2 वर्ड्स. उन्होंने कहा, डोंट पैनिक. राइट. और 2018 में जब इलॉन मस्क ने अपनी मशहूर कार टेस्ला लॉन्च की, हमने ये बहुत देखा है. Those of us, and I will turn 60 at the end of this year. तो हमारे जमाने में we have seen a lot of these predictions कि नौकरियां सब चली जाएंगी, दुनिया सब बदल जाएगी. हम जब पढ़ा करते थे, a lot of you kids who are in your teens now, तो जब हम हुआ करते थे 40 साल पहले आपकी उम्र के, तो हमारे लिए सबसे आसान और सबसे अच्छी नौकरी क्या होती थी?
जिसके लिए हम एस्पायर करते थे, दैट वाज टू बी अ टाइपिस्ट। जगह जगह पे मोहल्ले मोहल्ले में एक टाइपिस्ट, टाइप राइटिंग सीखने की दुकानें होती थी, और हम सब वहां जाके 12वीं के बाद या 10वीं के बाद एनरोल करके टाइप करना सीखते थे। और फिल्मों में हम देखा करते थे कि बड़ी बड़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे जिसमें सौ लोग टाइप किया करते, तो वो बड़ी अच्छी नौकरी थी। अब आप देखिए कहीं आपको नजर आता है टाइपराइटर या टाइपिस्ट या। सो द फर्स्ट पॉइंट स्मिता दैट आई एम मेकिंग इज दैट there is a specter of job losses. There is a prediction that several jobs are going to go. And let me, before people misunderstand me, clarify that there will be a lot of job loss. There will be a lot of jobs that will go away. But like with every technological revolution, they will be replaced by different jobs. तो जब टाइपिस्ट चले गए तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स आ गए, जब फोटोग्राफी की दुकानें बंद हो गई तो they all got converted into various other services that you see now. सेल फोन के की दुकानें 20 साल पहले कहाँ थी? फोन की दुकान कहाँ थी 20 साल पहले? अब हर तीसरी दुकान में सेल फोन बिकता है और बनता है। So that is the change that we are going to see, and therefore Arthur C. Clarke's message is what we need to remind ourselves of. Don't panic. So while on the one hand, I mean, because that's, something I was just looking at all these messages being put out by the government when it comes to the current reports around fuel crisis in India, and they are saying don't panic. But as always is the case कि आप डोंट पैनिक का मैसेज देते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत काफी दफा अलग होती है कि पैनिक के हालात बनते हैं। यहाँ मैं जो आपसे पूछना चाहूंगी, व्हेन इट कम्स टू एआई, आप इसकी इम्पैक्ट खास करके हमारी वर्कफोर्स में कौन से सेक्टर्स में देख रहे हैं? विल इट इसेंशियली बी the sectors that are doing with numbers, data crunching, and किस तरह के skill sets की इस वक्त जरूरत है हमारे workforce को, at what age, ताकि वो accordingly upgrade कर सके for the future jobs that we are talking about. Actually, Smita, thanks so much for pointing that out. वो बहुत सही कहा आपने कि ये गैस खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया और हम सब कह रहे हैं कि डोंट पैनिक, and that's really an interesting analogy. See, यहाँ पे क्या है मसला कि जब गैस खत्म हो जाती ना, यू बेटर पैनिक बिकॉज बिकॉज फिर खाना नहीं मिलता कल, या तो that's a real situation. यहाँ क्या है कि अब जो आप लोग सब 17, 18 या 20, 22 साल के हैं, यू हैव टाइम. इट इज नॉट कि गैस कल खत्म हो रही या नौकरियां कल बदल जाएंगी. एंड दैट्स व्हाई थर्सी क्लार्क स्टेटमेंट. तो क्या होगा, ये बात तो तय है कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी एज वी नो देम नाउ. मुझे स्मिता और मुझे ये शक है, और स्मिता को नहीं है तो मैं बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे क्या? देयर विल बी, इफ यू सी व्हाट वी डू, तो ये तो बड़ी है. व्हाट वी डू इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम इधर उधर से पढ़ के किताबें, हम उसका एक खुलासा करके एक लेक्चर देते हैं. तो ये तो दैट इज द एसेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये तो शायद मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था. क्यों पढ़ा रहा था? क्योंकि मैंने मिल्टन फ्रीडमैन पढ़ रखा है. अब आप टाइप कीजिए कि भाई मिल्टन फ्रीडमैन ने मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या कहा, और आपका आपका कंप्यूटर आपको बढ़िया सा लेक्चर दे देगा, which will be far better than my lecture because it will have authenticated real time data and information. So क्या होगा हमारी नौकरियों का? What will happen to accountants? What will happen to those who prepare legal drafts? What will happen to people who diagnose medical reports? तो ये नौकरियां तो लगता है कि जरूर जाएंगी, और इसमें बहुत सारा काम हो रखा है फ्रॉम स्टैनफोर्ड डाउन टू वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज इन चाइना, जहाँ पे वो नौकरियां जो बड़ी आसानी से रिप्लेस होंगी. वो आप सब जानते हैं कि कोडिंग फॉर एग्जांपल इज जस्ट अबाउट गॉन. तो ये नौकरियां तो चली जाएंगी, एंड देयरफॉर वी हैव अ फेयर सेंस. बल्कि दैट्स द गुड न्यूज, दैट दिस इज, वी वेरी क्लियरली नो कि कौन सी नौकरियों को खतरा है. That is why it is so
it's so interesting to see कि हम लोग we can predict and we can see what jobs are going to go. तो ये तो to answer Smita's question, will policy jobs go? Let's be straight to the point. So and that's the interesting thing, that the reason why policy schools are now becoming important, और हम आप सब लोगों से कह रहे हैं कि पॉलिसी पढ़ें, वो वो सिर्फ इसलिए कि जैसे जैसे हम कुछ नौकरियों का खात्मा देखेंगे, we will see a lot more positions open up in the policy space. We will see a lot more positions open up in the creative space. We will see very many positions opening up in the entertainment space. क्योंकि और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा अब पड़ेगी. एंड स्मिता, एक क्वेश्चन जो मैं प्रीएम्प्ट करके आंसर करूं, वो एज एन इकोनॉमिस्ट आई मस्ट डू दैट, कि पिछले 8-10 साल में जो बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें आई या जो बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए, उसमें से एक काम एक ऑथर और एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन तिरोल को 12 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का. और जॉन तिरोल ने, और मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि यू लुक इट अप एंड रीड हिज excellent treatise on incentives and regulation. और टिरोल ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी बन रही है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उसको रेगुलेट करने में कितनी मेहनत लगेगी और कितने लोग लगेंगे. So Smita, what he says is very interesting, and ये सवाल मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ. आप सब लोग in your heads, those who are listening to me, think of आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? क्या आप 28-30 लोगों में कोई ऐसा है जो विंडोज नहीं यूज करता? आप में से कितने लोग हैं जो जब सर्च करते हैं तो गूगल नहीं यूज करते, कुछ और यूज करते हो? है कोई? तो सवाल टिरोल ये पूछते हैं कि ये क्यों होता है कि जो चीजें 50 साल पहले बनी, विंडोज इज अ 50-year old ऑपरेटिंग सिस्टम. बिल गेट्स ने जब बैठ के डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा, दैट्स 50 years old, 40 years old now. 40 years में there is no competition to Windows. 27-28 years after Google, there is no competition to Google. पुरानी इकोनॉमी में क्या होता था? आपने कोई बढ़िया सी टेलीफोन बनाया, कोई कार बनाई, कुछ दिनों में there will be a new competitor. When Ford built his car, very soon there were 20 competitors, and then the Japanese took over. Why is it that in modern technology there is no competition? Why do we see so much of market dominance? और टिरोल ये कहते हैं कि ये पॉलिसी का फेलियर है, ये रेगुलेशन का फेलियर है कि बड़ी कंपनियां इतनी पावरफुल हो गई. आज देखिए, आप दुनिया को बड़ी कंपनियां चलाती, अल्फाबेट चलाता है, टेस्ला चलाता है, एलॉन मस्क चला, और वो इसलिए कि हम वी हैव फेल्ड टू रेगुलेट. एंड दैट इज वेयर वी विल नीड मोर पीपल, मोर अंडरस्टैंडिंग कि बिग टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट किया जाए, बिग टेक्नोलॉजी के असरात जो हैं उनको कैसे समझा जाए. आज दुनिया भर बोल रही कि सबसे बड़ा खतरा, आप पूछिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, आप पूछिए कि दुनिया को अगले 20 साल में सबसे बड़ा खतरा कौन सा? What is the big challenge that the world is going to face in the next 20 years? You know what the answer is? A lot of you will say it is climate change, and you're not wrong. But that is not the biggest challenge that academics, that bureaucrats, that private sector says. In that big study that was done by World Economic Forum, it is misinformation. It is falsification of data. And that gets even more ominous with AI. So, इसलिए, what I want to say to us, to the people in this room, that the big thing that is opening up is this sector of regulation, of fact check, of good journalism, and of good policy making. That was Right, a long answer. Sorry, Smita. No, please. We don't do TV shows here. We do deep dive conversations Yeah. here on Let's Talk Policy, and it's interesting because आज सुबह ही I was speaking, in fact, at a panel
at a day-long seminar which was being held to discuss AI and media by Google data leads. And there were very interesting, inputs from newsroom editors to a different perspective from somebody like me, who's a ground reporter, a one-man army on my YouTube channel, and the way we look at AI. But I think it's an important thing that you say that AI के साथ जो चुनौतियां हैं जब वो बढ़ेंगी तो उसकी रेगुलेशन के लिए भी पॉलिसी में वहां पर और ज्यादा स्कोप और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे. Which then brings me to my question, Dr. Khan. And after this, I'm glad to take in audience questions. If you have questions, please use the emoji or just drop in your questions. एक इंडिया में इस वक्त जो हमारे जॉब की सिचुएशन है फॉर द यंग, देयर वाज अ रीसेंट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट अ वीक बैक which says that 40% of the graduates do not find a salaried, decent, white-collar job at least for a year. There is that, they're unemployed. People who are passing out of class 12 are obviously not finding jobs. They are struggling with it as well. So, what is the current workforce situation when we're talking about the young in India? And how does that get complicated then when you bring in the AI mix? बहुत अच्छा सवाल स्मिता, and this gives me the chance to lecture all of you a little more. और मैं Please ये be our बात guest. क्या करूं, like प्रोफेसर हूं तो I have to keep slipping into that role. You see, what is important for us to understand is that we are talking about two distinct, separate problems right now. It is a tragedy that both have come together. एक तरफ the threat of AI और दूसरी तरफ, and a completely distinct set, is the rising level of unemployment in our country. ये दो, it is important to separate them out, especially for people who are looking at policy. It is important to understand that these are two completely insulated, compartmentalized problems. तो जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, तो क्या हुआ है हमारे पास क्या हुआ है कि पिछले 10-12 साल में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो टेपर ऑफ हो गई. आप बहुत सुनेंगे कि वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. गलत नहीं है, वो सही बात है. 6.5%, 7% पे हम ग्रो कर रहे हैं. वी आर ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट अमंग द मेजर इकोनॉमीज. देयर इज गैम्बिया एंड अजरबैजान एंड ऑल व्हिच आर ग्रोइंग एट 25-30%, बट वो छोटी इकोनॉमीज. 6-6.5% ग्रोथ रेट का मसला क्या है? 6-6.5% ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम ये है. देखिए, अच्छी बात तो है, ग्रोथ रेट तो है. 100 जाके 106 हो रहा है, 107 हो रहा है, तो ग्रोथ रेट तो है. और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो 0% के पास है. तो why are we still not happy with growth rates of 6-7%? The problem with 6-7% growth rate is कि जब हम 7% से ग्रो करते हैं तो इकोनॉमी जरूर 7% बढ़ती है. हम जरूर 100 कुर्सियों की बजाय 107 कुर्सियां बनाते हैं अगले साल. लेकिन उन 7 बनाने में हमको कोई और एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती. जब आप 100 यू नो 100 कुछ कोई कप बना रहे हो और उसको 5%, 6% बढ़ाना हो, तो यू कैन मेक डू विद द सेम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ दैट यू हैव. लोग कब हायर करते हैं? जब ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा होती है. दैट्स अ थंब रूल. और आप इसीलिए देख रहे हैं कि पिछले 10-12 साल में हमारे पास ग्रोथ तो हुई है, लेकिन मुलाजमत नहीं बढ़ी, नौकरियां नहीं बढ़ी, because the growth rate is not enough to hire more people. Now, that's one. The second issue. So each one of these, please note, are very serious issues. So one is that we have growth but not enough. जब चाइना ने नौकरियां बनाई, जब चाइना was at our stage 25-30 साल पहले, तो चाइना ग्रो कर रहा था 13-14%. That's why they produced 400 and 500 million jobs. हम ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे, तो हम जॉबलेस ग्रोथ जिसको कहते हैं वो देख रहे हैं. दूसरी चीज जो और भी संगीन मसला है, एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू दैट वी अनफॉर्चुनेटली इग्नोर, इज कि हम, एंड आई कन्फेस टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, हम बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते. हमारे लड़के लड़कियां जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और ग्रेजुएट कोर्सेज करके निकलते हैं, they are completely unemployable. Our education system is a very poor quality education system. As a result, जब आप 15 लाख इंजीनियर या इस साल 20 लाख इंजीनियर बनाएंगे, वो क्या नौकरी करेंगे? उनको तो A+B होल स्क्वायर नहीं आता.
क्योंकि हमने सिखाया नहीं वो। सो इसीलिए वो मैकिंजी की बड़ी फेमस रिपोर्ट है कि 7% इंजीनियर ऐसे होते हैं जिनको आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, 93% ऐसे होते हैं who are completely unemployable, who can't who don't understand a simple physics equation, who can't speak English. So therefore I want you to demarcate these two situations. Rising unemployment, particularly unemployment among the educated youth, is a serious policy issue, and that is because we have focused on जॉबलेस ग्रोथ। हमारा पूरा रुझान ये रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, मार्जिन्स बढ़े, बट नौकरियां ना बढ़े, एंड उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। हम जब पढ़ा करते थे 100 यूनिवर्सिटीज थी, हमने जब पढ़ाना शुरू किया 300 थी, आज 1200 यूनिवर्सिटी है। लेकिन लुक एट द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, लुक एट द पेडागोजी, लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो एक तरफ हमने एजुकेशन को बिल्कुल लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे ला रखा है, और दूसरी तरफ हमारी ग्रोथ ऐसी रही है कि हम नौकरियां नहीं प्रोड्यूस कर रहे। सो टू गेट बैक टू आंसरिंग स्मिता's question in 2 lines, there are two problems we have. One is a technological problem of the onset of AI, which is going to take away some jobs. But the bigger problem and the more immediate problem is the abysmally poor quality of education. I think it's very important points that you have made, sir. And in fact, for the participants who have come in, I recently had a conversation with another noted development economist, Professor Biswajit Dhar, which is on my YouTube channel. You can watch that on Smita Sharma Journalist, where he essentially makes this point that more than unemployment, it's a question of underemployment, given the lack of our skill sets. सर, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा अब आज के मौजूदा हालात पे रिफ्लेक्ट करूं, बिकॉज वी कांट बी टॉकिंग अबाउट कि अब इस वॉर का इफेक्ट क्या हो रहा है। हम एआई की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एआई से ज्यादा बिगर चैलेंज इस वक्त इज द वॉर एट हैंड फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडियाज। अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, हालांकि निगोसिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है, वॉर खत्म हो जाए, कब खत्म हो, इट विल कंटिन्यू टू सिमर, इज माई अंडरस्टैंडिंग एज अ फॉरेन पॉलिसी जर्नलिस्ट फॉर श्योर। इसकी जो इफेक्ट्स हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म, आप क्या देख रहे हैं सर ऑन आवर इकोनॉमी? Meena, actually the questions are not disjointed. This war, इस वॉर को जो भी इस वॉर को फॉलो कर रहा है, आपने ये देखा कि ये बड़ी अजीब वॉर है। वॉर कैसी होती थी? जब आप फिल्में देखते हैं वॉर पे, तो क्या होता है? वो यलगार हो, लोग तलवार लेके घोड़े पे भागते रहते हैं, देयर आर पीपल हु आर रनिंग विद, और एटलीस्ट जो मॉडर्न है कि टैंक चल रहा है और टैंक जाके तोप से उड़ा रहे हैं लोगों को। यहाँ क्या हो रहा है? ईरान, इजराइल, अमेरिका, सब अपने जॉयस्टिक लेके वॉर कर रहे हैं। There is nobody fighting the war. Everybody is, pressing one button, एक मिसाइल, उन्होंने दूसरा बटन प्रेस किया, इंटरसेप्टर, ये वॉर हो गई है। ये भी एआई, the war is an AI war. So everything has changed, but the impact of the war is going to be far reaching, as we can already see, because you see, war and foreign policy itself today has become so very complicated. It is no longer about a simple issue. जंग क्यों होती थी पहले, राइट? जब जंग होती थी तो एक कोई वजह होती थी ना जंग की, कि हेलेन को कोई लेके चला गया, तो हर हस्बैंड वेंट टू ब्रिंग हर बैक। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वॉर, द मोस्ट फेमस वॉर। अब क्यों लड़ रहे हैं? पुतिन जो है वो यूक्रेन से क्यों लड़ा है? कोई किसी को पता है? पुतिन ने कभी कहा है कि मुझे क्या, व्हाट इज माय एंड गेम? व्हाट इज द यूएसएस एंड गेम इन ईरान? भाई, इट वाज कि खमेनी को हटाना था, हट गया। अब क्या है? अब नाउ द गोल हैज बिकम कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करना है। वो तो फ्री था ना 2 महीने पहले। तो आपने जंग की, फिर वही कर रहे हैं। सो लाइक इन अफगानिस्तान, एज द जोक गोज कि आप 20 साल लड़ते लड़ते तालिबान से रिप्लेस कर दिया। सो व्हाट इज द एंड गेम इन वॉर? व्हाई आर वी फाइटिंग दिस वॉर? यहाँ कम से कम एक ही हफ्ते में खामनेई से रिप्लेस कर दिया। अब फिर लड़े जा रहे हैं। अब क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट गोल? सो द दिस इज व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर. I'm speaking only as an economist. I'm not a war
foreign policy expert. But I'm saying कि what is the economic impact of this war? It is far reaching. अमेरिका में जहाँ पे बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग प्राइसेस पे, फ्यूल प्राइसेस हैव डबल्ड. हमारे यहाँ कतारें लगी हुई हैं विद गैस सिलेंडर्स. So this is going to have a big impact, and it is going to make it is going to increase the investment in technology in war tremendously. अगली लड़ाई तो और भी ज्यादा एआई वाली लड़ाई होगी. तो इस जंग का we need to know why people are fighting this war. What is it that the US wants? What is it that Israel wants? What is it going to be our role in this war? हम क्या चाहते हैं इस जंग से? हम किसी के साथ हैं, नहीं है? Should we be taking side? Should we be mediating? We have an important role because इस जंग में अगर नुकसान हुआ है तो हमको भी हुआ है. हमारा वो चैबार का पोर्ट खत्म हो गया. We have lost access to cheaper oil that we used to get from Iran. रशिया जिससे हम खरीदते थे हमने बंद कर दिया. अब जब हम जा रहे हैं तो दे आर सेइंग कि हम नहीं बेचेंगे आपको सस्ते में. तो it has had a big impact on us, and therefore I think that the economic impact, the technological impact of this war is going to be severe. So you think ये further slow down करेगा our growth rate? Because you were saying that unless we are hitting a 10% and above, as long as we stay steady, there is that problem that you're not creating jobs then, because you're not getting that job rate enough. So is this going to further impact that growth rate that we already have, sir? Mita, it already has. आप देखिए, the stock market lost something like 6-7 लाख करोड़ रुपए every day over the last few days. The rupee has gone off to 94. वो मुल्क जिसकी trade deficit grows by the month. Our trade deficit has never been higher. Last month our monthly trade deficit went to some $30 billion. तो जहां हम import करते हैं और जहां हमारी economy depends on our import, वहां पे अगर रुपया इस कदर गिरता रहे तो इम्पैक्ट तो बहुत होगा. और फिर जो दूसरा पहलू है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया, नाउ दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज शैटर्ड, इज शेकी, इज अनसर्टेन, तो वो भी नहीं आएगा. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही तो नौकरियां आती हैं. वो भी अगर बंद हो जाए तो वी आर गोइंग टू सी अ सीरियस इशू. Coming back to the original topic, and it's interesting to you point out that actually there's so much of this warfare is around AI. I mean, when you're talking about drones, when you're talking about aerial strikes, when you're talking about missile technology, it's a lot of it actually involves AI, and where, of course, again, so much can be studied, and there's an opportunity in every crisis and in every chaos too. But there was another लेबर मार्केट स्टडी जो एंथ्रोपिक ने किया था हाल में, जो हाईलाइट करता है कि एआई की जो इम्पैक्ट है जॉब्स पर जो हो रही है, वो कहते हैं कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है जैसे क्लॉड एआई है, चैट जीपीटी है, दे कैन परफॉर्म मेनी वर्क प्लेस टास्क, लेकिन एक्चुअल ऑफिसेज में अभी भी जो है उनकी यूटिलाइजेशन लिमिटेड है. इट्स ओनली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, विच रेजेस अ क्वेश्चन कि इंडिया की वर्कफोर्स में क्या ये चैलेंजेस और ज्यादा होंगी एआई ड्रिवन इकोनॉमी में? क्योंकि आज की तारीख में हम जहाँ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, शायद हमारी बहुत गैप्स हुई इन मैथमेटिकल, साइंटिफिक and the digital skills, and there is a huge gaps between the haves and the have nots when it comes to digital technology too. बहुत सही स्मिता. हमने जब भी देखा है कि वी हैव मूव टुवर्ड्स इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, उससे फायदा तो हमको बहुत हुआ. प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई, एक्सेस हमारा बढ़ गया, वी हैव बेनिफिटेड. जहां व्हेन वी मूव्ड टू ऑप्टिकल फाइबर 30-40 साल पहले, नौकरियां बढ़ी, बैक ऑफिस ऑपरेशंस आ गई इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट केम इन. सो वी हैव डेफिनेटली ridden on the benefits of intensifying technology. There is no doubt about it. लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो इतना ही ज्यादा संगीन है. And that actually is the policy question. That technological progress increases productivity, increases innovation, decreases wastages, improves access. That goes without saying, and that is very important. But what we miss out on is जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटेंसिटी बढ़ती है, वहां अनइक्वल एक्सेस इज द रिजल्ट. अब आप देखिए, when I tell you very very simply, हम क्या करते हैं, मैं
मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हूँ, हम बड़े इम्तिहान करते हैं, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते हैं। हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जिसको एग्जाम लिखना है वो वेबसाइट पे जाए, वो ऐप डाउनलोड करे, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे। नाउ there are parts of even Telangana, which is one of the better states in the country, जहाँ पे बिजली नहीं होती, जहाँ पे डिजिटल एक्सेस इज लिमिटेड। वो बेचारा क्या करे? उसको बगल के शहर जाना होता है, वहां पे वो जाके किसी कंप्यूटर सेंटर को ढूंढे, वो किसी पे डिपेंड करे कि वो फॉर्म भरेगा, वो 50 गलतियां करता है जिसकी वजह से उसका his candidature is lost, and he spends an enormous amount of money doing this. We have actually, in a weird sense, we have actually reduced access. कश्मीर में और मणिपुर में जब लोगों को हम कहते हैं कि भाई ई सेवा एक्सेस करो, वहां तो हमने इंटरनेट ही बंद कर दिया। सो दिस गैप एक्चुअली बिकम, हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की थी इन माय ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड द सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जहां हमने ये देखा कि ये कोविड के बाद व्हेन वी मूव टुवर्ड्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन मोबाइल हेल्थ एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, हैज द एक्सेस टू हेल्थ इंप्रूव्ड, एंड उसके नतीजे आर प्रिटी इंटरेस्टिंग कि yes, technology has improved access, technology has reduced costs of diagnosis and so on, but to certain communities, to certain groups, technology access has become more difficult. So in this choice that we make, like when we move towards teaching, मैं एक बड़े अच्छे बहुत one of the better colleges I was teaching in, which where we moved to online classes, and I realized कि जब मैं पढ़ाया करता था तो 25 या 30% से ज्यादा अटेंडेंस होती नहीं थी। तो हम बड़े नाराज, एज अ टीचर यू आर वेरी अनहैप्पी इफ द अटेंडेंस इज लो। And then when we found कि 2/3 of the students of this very very well-to-do college did not have access to a cell phone or a computer. तो हमने क्या किया? हमने 25-26% को पढ़ाया और 70% को पीछे ढकेल दिया। So therefore, I think and this is an important lesson for policy makers, कि जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और डेटाबेसेस से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कीमतें कम होती हैं, we should also be mindful about those people who get excluded. So digital exclusion is a very serious problem right now. सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, एंड अनलेस देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज कीपिंग इन माइंड कि अभी हमने देखा कि हमने एआई समिट को लेकर इतना हमारा हुला हुपला हुआ, शूशा हुआ, बहुत नेगेटिव प्रेस भी आया, बाद में कुछ अच्छी बातें भी हुई, बड़े बड़े नाम आए थे, जरूर मौजूद थे। एट द एंड ऑफ द डे अगेन व्हेन यू लुक एट कि हमारी एआई स्किल्स और ग्लोबल इकोसिस्टम में compete करने के लिए जिस तरह की हमें रिसर्च की जरूरत है, जिस तरह के संसाधनों की जरूरत है, जिसमें यूएस चाइना जैसे देशों को इतना एज मिला हुआ है, यूरोप को एज मिला हुआ है, अनाउंसमेंट्स सुनने को आता है कि ये कंपनियां आ रही हैं, गूगल एआई हब आ रहा है विशाखापट्टनम में। The devil always lies in the details, sir. Do you think that there is going to be a gap between what we are assuming as big announcements and what will really play out on the ground in terms of true research in this space? Now, on this, I am pretty hopeful because given the abundance of talent in our country, and the fact that wages are low, we are very well placed to reap the benefits of research into AI. And I think that we are also seeing some early results by way of these investments that are coming in, by way of these global centers that we are opening in the country, by way of the fact that we have some of the finest technologies and the infrastructure that is growing in this area. What we have to be mindful about is that we are at the lower end of the spectrum. We are not investing in, we are not leveraging high-end technology.
which is where China takes a leap, which is where the US is doing better. And therefore, for us, it is very important that we free up our intellectual space. We ensure that our universities and our research institutes no longer are bound by archaic institutions that do not encourage innovation and encourage high-end innovation. So हमको ये बहुत जरूरत है. There is a huge opportunity there for us. We are well situated. We've been in the technology space for at least 30 years as leaders. Cities like Bangalore and Hyderabad are easily the intellectual, the technological, not the intellectual, the technological capital of the world. And therefore, it is important for us. And I go back to what Mokir, etc., said when they won the Nobel Prize, that it is important for us to generate a climate of continuous innovation, not sporadic innovation, not innovation for the rich, not innovation for some products that are highbrow, but a culture of innovation that builds itself on freedom, on innovativeness, and on invention that will allow us to reach out and work on the state of the art. That is what is important. सो सर, जब हम बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि आपको एआई की वर्कफोर्स के लिए तैयार होना है, एक तरफ जॉब्स भी जाएंगी लेकिन आप हाँ. स्किल होते हैं, अपग्रेड होते हैं, आई मीन इंडिया में क्या वो एआई की डीप रिसर्च लर्निंग का कल्चर है? या हम जैसे हम जब मुझे याद है कि जब हम कंप्यूटर्स की जनरेशन में हम सीख रहे थे इंटरनेट वगैरह को, ट्यूलेक वगैरह से शॉर्ट टर्म 3 महीने 2 महीने के कोर्सेज होते थे कि गो एंड डू दोस कोर्सेज, हाउ टू ऑपरेट विंडोज, हाउ टू ऑपरेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड थिंग्स लाइक दैट. So how does one train in AI really? Is it about that we need to have long-term educational courses that meet these futuristic demands, or you go step by step because technology is changing every single day? Thanks for asking these questions. I would have missed this. But this is a question that is a very layered question. It goes to basic infrastructure, about the pedagogy itself, and to a high level policy environment. So I will split it up into 2 or 3 things. Firstly, we are very good at this. When the technology innovation hit us 30 years ago, 35 years ago, जब नई नई GE and AT&T came to India, तो आपने देखा होगा कि in areas, those of you who are from Hyderabad, if you have ever been to Amirpet, you will see कि उस सारे इलाके में 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. उसमें आप वहां जाइए, आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वेदर इट इज ओरेकल, जावा, SQL, whichever, आपको 2 महीने का कोर्स मिल जाएगा at $500, at $200. तो हमने ये इंडस्ट्री को बहुत डेवलप किया है इन अ वेरी केओटिक मैनर, इन अ वेरी इनफॉर्मल मैनर, जहां पे आपको छोटी छोटी दुकानों में you are able to learn new technology very quickly at a very low, at a low price. And that is what I think we will be able to do with AI. And we are doing, you can go and do a very quick training program on Chat GPT, on Gemini, on Copilot. बड़े आसानी से लोग आपको कोई भी LLM की तैयारी करा देते हैं अब at $100, $200. सो ये तो क्षमता, ये स्किल हमारे पास बहुत है, and I think that is going to stand us in good stead. At a slightly higher level, what we need to do to leverage AI is to strengthen our creative industry. Because you see, what will outlast AI as it removes all the non-creative. See, ये technology की अब मैं वो जो अगला level है ना, the philosophical level, we must appreciate the fact that any technological innovation basically takes away the tedium from the work. तो लोअर एंड काम होता है ना, जो मुश्किल काम होता है, वो हटा देता है. बट व्हाट इट puts our focus on is on the creative end. Unfortunately, while we are very good at routine tedious jobs, very good at training people on doing plumbing and skill and bricklaying and masonry, we are very poor at encouraging creativity. We have to admit this. We fear creativity. We do not like to see new things. We don't want to see the old disappear and destroyed. And that is the fundamental difference that we have to bring into our thinking, our culture, our education,
to be able to leverage the new world that we will see once these lower end jobs are taken away by artificial intelligence. अच्छा, मैंने कहा था कि मैं आखिरी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन हमारे दो दर्शक, दो पार्टिसिपेंट्स देर से जागे हैं, सो आई जस्ट टेक दीज लास्ट टू क्वेश्चंस एब्सोल्युटली। रुद्र प्रताप सिंह आपसे पूछ रहे हैं कि माय राइटिंग इज वीक, so I use AI to present my thoughts in words, but in the field of public policy system, we are opposed, we say okay, it's not good to use that. I want to know if I'm doing it wrong, or is there a problem in the system? What is the fair balance when it comes to the line of use of AI in public policy writing? You are spot on. You're doing absolutely the right thing. Who cares about language and vocabulary and all today? आज हम ये focus only on the solution. On आपने कितना simple, कितना straightforward, कितना measurable policy solution इजाद किया है. So please use all the AI that you can. But as long as the ideas are generated by him, right? You can't let AI drive your solutions. AI can support you and assist you, I guess, not AI will become the never give you force driver. Yeah. AI will never give you a solution. At best, it will help you improve the process. The solution will come from, because solutions are creative solutions. Solutions are those solutions that take into mind all the variables that confound you, that confound any artificially intelligent system. So therefore, when you think of that, and then when you want to put it forward and you want to use AI tools, please feel free. All my students are encouraged to use as much AI as they can to improve their presentation. That's what AI does. It improves your presentation. Right? मैं तो तो इतनी ओल्ड जरूर स्कूल हूँ, कीजिए मैं तो वो. बच्चों से पेन और पेपर में ऑपेड लिखवाती हूँ, बट अच्छा. No. But for you, Smita, in communication, that's an important thing, right? Yeah. But for me as an economist, I want them to more focus on the measurement. So I say, Right. वहां पे focus. Don't. So आप बहुत सही कर रहे हैं. Please go ahead. I think thank you so much. मैंने बहुत enjoy किया इस conversation को, and earlier at that media and AI conference today, I just reminded people that let AI make you smarter, let AI make you more efficient. We have cases now of people who are using very smart chat GPT prompts to think of some ideas, but unfortunately are being dumb enough to leave those prompts in the articles that they're publishing. So don't let AI do that. Still use the critical gray thinking, but the world is in a constant state of change. There never was an advantage in fearing technology, and you cannot be somebody who can fear technology. I mean, I also belong to a generation, for us, apples and blackberries were fruits when we were growing up, but see how that has changed. So thanks, everyone. Quick reminder, Kautilya School of Public Policy, the admission cycle is on. ब्रोशियोर आपके साथ शेयर किया है रंजीता ने इन द चैट बॉक्स, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं. कोई क्वेरी हो तो प्लीज रीच आउट कीजिए, एंड मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा देख भी सकते हैं, और उसमें you'll also get to see a lot of conversations happening both in Hindi and English around AI too. So thank you so much, Dr. Amirullah Khan. I'll let you go back to the Scottish weather and maybe some Scottish music too. Thank you so So much. thank you so much for all those who found the time to participate in this.